तुमको ऐसे लुक में भी ये हॉट लगते हो, हाय अर्जुन रामपाल है यार. But yeah, sir, the acting has just been absolute aces. But more than anything, sir, thank you for uplifting me on set. You know, बहुत मुश्किल था, जैसे कि उन्होंने mention किया. चोट लग जाती थी, गिरते थे, पड़ते थे, खून पसीना लगाते थे. कभी कभी सर भी ट्रिप करके गिर जाते थे, माथे पे लग जाता था, वो ऐसे उठ के कुछ नहीं चलो चलो. You know, he was just an absolute beast, and we are so honored to have you as part of this ensemble, sir. Thank you for everything. Sara, I can't believe we're here on this stage. What a special moment for you. I'm honored to be part of it. I'm lucky to be part of such a special moment for you. Sara here is a prodigy. आपको पता चलेगा, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब बचपन से ही आपको पता है कि दे आर जस्ट लाइक अ चाइल्ड प्रोडिजी. लाइक एक बार डकोटा फैनिंग आई थी हॉलीवुड में. आई थिंक सारा, इट्स टेस्टामेंट टू द फैक्ट दैट यू बीट थाउजेंड्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स टू लैंड दिस पार्ट, एंड इट्स एज इफ यू वर बोर्न टू डू दिस. ऐसे लगता है ये 50 फिल्म करके आई हैं. शी इज सो प्रिकॉशियस एज अ पर्सन, एज अ परफॉर्मर. You are one of the finest actors that I have shared screen with. You make me look better, and my heartfelt gratitude for that. I just can't believe that it's your first film. Obviously, you know, somebody who I love and respect a lot, Mr. Mani Ratnam, sir, you've acted in his films as well, and you've showed your potential, and this is when the world will see you on the big stage, and I'm really, really happy, and I'm very, very proud of you. Thank you, Sara. Ma'am, आपके बारे में क्या बोलेंगे? हमारी अडल्ट रेटेड फिल्म है. जो भाषा मैं आपके लिए यूज करना चाहता हूँ वो मैं शायद इस स्टेज को शोभा नहीं देगा. आज बड़ा फॉर्मल सा इवेंट है, बट आप so, you are an absolute beast, ma'am. It really takes conviction of another level to back something like this, a vision like this. And जब आप कुछ बहुत ही बड़ा करने जा रहे हैं लाइफ में, the process can never be easy. Every step of the way we would face challenges, and we could fall back on the backing of Jyoti Deshpande. Every pore of mine is grateful towards you for backing this, for mounting it, and for giving it everything that it needed to become what it is. Thank you so much, ma'am. And finally, the man, the visionary. इनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा. जब आप पिक्चर देखेंगे आप खुद महसूस करेंगे ये क्या चीज़ है. When he made Uri, he burst onto the scene like an absolute explosion. And it's been so many years. How many years, sir? You're back on screen? 7. After 7 years, sir is making a film. And he's absolutely unflinching, absolutely uncompromising in his vision, in his execution. He never settles for anything other than what he's dreamed up. I doff my hat to you, sir. The amount of work you've put in over the past 2 years. First of all, when we first engaged, I was shocked that you were even making something like this. And he was like, "यार करना है यार, दिखाना है दुनिया को कि हम कौन हैं." You know, he assumes the responsibility of Indian cinema, and that's why he's a champion. And you will see it on December 5th. What he's created is an absolutely unprecedented work of cinema, and I'm really happy and really proud that you made me a part of it. Thank you, sir. और हमारे करता धरता, the man who made it all possible, put it all together, and made sure that everybody put their best foot forward. We used to always say, if everybody here, and we had it's a big film, we had many people working on it, so many people. If everybody puts their best foot forward, everybody gives more than 100%, because this is a team sport, you see what will happen. And honestly, picture ka jo bhi ho, I feel like I've already won. Just being a part of this, going through this, the past 2 years, what we've created, I feel extremely blessed and extremely grateful. Thank you all. I hope you enjoyed the trailer. घर जाके YouTube पे भी देखना. First of all, talk to us about that perfect balance, sir. I think पहली बार जब आदित्य ने मेरे को कहानी सुनाई, तो मेरा पहला जवाब यही था कि हम इसको एक नए तरीके से कैसे बताएं, और इसको ऐसा करें कि दुनिया में कभी किसी ने ऐसी फिल्म ना देखी हो. तो द आइडिया वाज टू सच्चाई से कितना हम करीब रह सकते हैं फिल्म में. All the actors, I mean, they've just killed it. Thank you, sir. I'd just like to add, before we get to the main, that could not be more
than in this context. Two people I forgot to mention are Sanjay sir and Akshay sir. Akshay sir is going to be a scene stealer, as he always is in everything that he's a part of. We're really missing him today, and it's a massive deal for me to be in a movie with Sanju Baba. You know, bachpan se he's one of my screen idols, one of the major motion picture heroes from the 90s. Copied his style, watched all his movies from a young age, and to be in a movie with him is extremely special. Show it to people how you copy him. Come on. सर आपने तो ट्रेलर में दिखा दिया, मैं बोल दूंगा तो वायरल हो जाएगा. एसपी असलम के अगर दगाबाजी की तो मारने से पहले तुझे बनाऊंगा. और जमील साहब आपको वो जो आपने देखा होगा वो टीजर में था एक ऐसे हाथ मारने वाला, वो भी पहले इसने बोला मत करो. मैंने कहा नहीं यार प्लीज करने दे यार प्लीज, लोग बहुत एंजॉय करेंगे उसको. और वो हुआ एंड धीरे धीरे वेल एंड माय जर्नी विद हिम स्टार्टेड फ्रॉम उरी विद अ वेरी स्मॉल रोल एंड कम लॉन्ग वे विद दिस फिल्म. और मैं इतना कहूँगा इस फिल्म के बारे में कि आपने जो भी अभी इस पर्दे पर देखा है, पिछले 2 बार आपने देखा है, वो लिटरली ट्रेलर ही था. फिल्म तो अभी बाकी है दोस्तों. And that is this film Dhurandhar, thanks to this man Aditya Dhar. वो पेपर पे ही जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई थी, इतनी एम्बिशियस फिल्म को बैक करने के लिए you needed somebody like a Jyoti and a Gio, and without that none of us would be here standing here. Okay, and जो भी लोग जुड़े हैं इस फिल्म के साथ, मैं आज उन सब का गुजार हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सब लोगों को, फ्रॉम द हेयर मेकअप टीम, कॉस्ट्यूम टीम, आर्ट डिपार्टमेंट टीम, cinematography team, okay, the music team, all the actors. Aditya has made us look so ugly in this movie. Thank you so much. कि कोई हमें पहचानेगा ही नहीं. The most handsome on set. Because he wanted to look the most handsome on set. But the process all of us had to take. Everybody had to bring their triple A game to this film. And Ranveer, what he did for 2 years, I've seen this man. I mean, wow. I have seen him. I'm so proud of him because it's not easy. What he did. I did not see Ranveer even once in the frame. It was always Hamza. And that was incredible. Okay, Maddie, this is the first time I'm working with him. Unfortunately, we don't have any scenes together. But I remember the first day I went to Dhurandhar set was in Bangkok. और बारिश हो रही थी बाहर, और मैडी वॉज शूटिंग, और मैं गया, मैं बोला ये कौन है एक्टर यार, कमाल का एक्टर है, बड़े अच्छे से डायलॉग वगैरह दे रहा है. मुकेश ने बड़ी अच्छी कास्टिंग करी है इस बार. मुकेश ने तो कमाल की कास्टिंग कर दी है. ओके, एंड it was Maddie. I didn't recognize him. He's phenomenal. Okay, in the film. मेरे 2 भाई अक्षय और संजू सर, उन दोनों का वीज़ा नहीं लगा तो वो नहीं आ पाए. बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैं नहीं बात करना चाहता क्योंकि अभी हमारी फिल्म आनी बाकी है. और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस दिन आदित्य मुझसे मिलने आए थे किसी और फिल्म की शूटिंग पे, और बहुत जल्दी में आए थे कि मुझे एक नरेशन देना है, आपसे बात करनी है, और मैंने इनके बातों को सुनी और रिसर्च मैंने सुनी थी ना, तो मुझे लगा कि ये आदमी कहाँ था अब तक यार. ये नेशनल अवार्ड विनर तो है पर ये कहाँ था. क्योंकि मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, बना नहीं लेकिन हिस्सा ज़रूर रहा हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में ख़त्म हो जाएगा. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं लुक टेस्ट कर रहा था इस लुक के लिए, तो हम काफ़ी देर तक लगे हुए थे, कुछ 3.5-4 घंटे लगते थे उस लुक में आने के लिए. और फिर मैं अपने आप को देख रहा था और हमें लग रहा था कि एक चीज़ कुछ मिसिंग है, एक चीज़, बस एक चीज़ मिसिंग है.
जिसकी वजह से एक सिमिलैरिटी जो हमें चाहिए थे वो मिल नहीं रहा था। और फिर आदित्य ने आके कहा कि मैडी अपनी होंठ पतले कर लो। उन्हें कहा कि होंठ पतले कर लो, तो पूरे फिल्म में मैंने ये होंठ पतले कर, और फिर जो रिजेम्बलेंस आई है एक छोटी सी वजह से वो पूरा चेंज हो गया। एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं महारथी हूं, नहीं मैं धुरंधरों के साथ काम कर रहा हूं। सारे के सारे। एंड फॉर मी इट हैज बीन अ कंप्लीट ऑनर, प्रिविलेज एंड if I may say, shitting in my pant moment, because each one of them is such an extraordinary actor. You have to be very careful about not letting your balls down, you know, and literally the word, you know, you have to play the game. And for me, I have to thank Mukesh Chhabra for having the vision, and Aditya Dhar for casting me, and Lokesh for making it happen, and to this rocket over here, who's standing behind like a tycoon behind, or like a typhoon behind all of us. But like I said, we will say all the thank yous and all the gratitudes once the film is released. We'll get many opportunities, I'm sure, for parties like this. But I have to tell you, it's been a complete privilege to work with all my brothers here who are darlings, and to this super rock star who has invested not just his time, dedication, life. I can't tell you all that he's invested, but I'm going to tell you, Ranveer, this is going to be the biggest payback of your life, bro. You know, when a person is so righteous in their intent, you know, when he has a purpose behind telling the story, something great always comes out of it. Or like you, ma'am, I also went along with it, faced every challenge along the way, and he was leading from the front with such passion that it was infectious, it was contagious, and I'm only ever so grateful to you, sir. You didn't, not for a second did Arjun ki aankh hoti hai na, wo, that's how you've gone about this film, sir. We were at a very similar stage in life when we met for this film. Over the past 2 years, we've both grown together. He had a baby boy, I had a baby girl, you know, and we worked out of our skin to make sure that, you know, our people, our team, our families, our audience are proud of what we've made over here. When we were talking about it in that same stage, I said, sir, ये ऐसी हिंदी सिनेमा में बनी नहीं है. He's like, I know that, bro. I know that. That's exactly what I'm trying. तो ये है लंबी छलांग, और आपने जो मारी है सर, जो मारी है. मतलब we used to discuss, यार एक टाइम पे एक फिल्म सिकारियो बनी थी, Zero Dark 30, Munich, American Gangster. मतलब we want to be counted amongst the most elite installments in the genre in the world. And we are Hindi cinema, we are Indian cinema, and we are here to make our country proud.